hope you are clear with the basic concepts of electricity that we had learned in the last class. So today we are going to start with the actual chapter, that is first topic, and that will be electric potential. Let us read the definition first. It is a bit technical, so I will be giving you some examples to make it more clear. Alright. So the definition is, it is defined as the work done in moving a point charge from infinity to a particular point. So let us understand this. हमने एक imaginary point मान लिया कि एक infinity point है, वहां से हमने एक पॉइंट चार्ज को मूव करवाना है और कहाँ लेके आना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है. सो वी आर डूइंग व्हाट, वी आर अप्लाइंग फोर्स एंड वी आर ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, दैट इज द इमेजिनरी पॉइंट, टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग a point charge from infinity to a particular point is known as electric potential. Let us make it more clear. We know that in any circuit or in for any conduction of electricity, what is required? Movement of electrons, or you can say movement of a point charge, a single unit charge. उसकी movement बहुत जरूरी है for the conduction of electricity. Now उसको मूव करवाने के लिए, पॉइंट चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें जो वर्क डन, दैट इज जो हमें काम करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऑब्वियसली वो काम हम नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को या पॉइंट चार्जेस को धक्का नहीं लगाएंगे. इज इट क्लियर? तो वो काम कौन करता है? टू बी मोर प्रिसाइज, कौन करता है वो काम? बैटरी. जो हम सेल या बैटरी जो हम एक फिक्स कर देते हैं सर्किट के अंदर, वो ये काम करते हैं. दैट मीन्स वो क्या करते हैं? वो वर्क करते हैं पॉइंट चार्जेस को मूव करवाने के लिए. लेट अस सी अनदर डेफिनेशन. पोटेंशियल डिफरेंस. कंसंट्रेट केयरफुली नाउ. इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B on a conductor. So you have 2 points. Let us say this is point A and this is point B. This is the circuit, battery और वो सब हमने लगा रखा है. It is the difference between 2 points A and B on a conductor through which current is flowing. इसमें से current पास हो रहा है as the amount of work done. मतलब जो हम काम करेंगे, जो हम वर्क डन करेंगे in moving a unit charge from A to B. मीन्स हमने यूनिट चार्ज को A से कहां लेके आना है? B में. तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कब पास होगा? जब 2 पॉइंट्स के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आपके पास 2 बीकर्स हैं और आपने उनको वाटर से फिल कर दिया. एक बीकर में वाटर जो है हायर लेवल पे है, मतलब ज्यादा है, और एक बीकर में वाटर का लोअर लेवल है. ठीक है, और आपने उसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? जो वाटर है, इट विल गो फ्रॉम द बीकर विच इज विद हायर लेवल ऑफ वाटर टू द बीकर विच इज विद लोअर लेवल ऑफ वाटर. इज इट क्लियर? सो द वाटर इज मूविंग. अगर दोनों बीकर्स में वाटर का लेवल बराबर होता तो क्या वाटर मूव करता? नहीं करता. तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स which makes the water to move from one level to another level, or you can say from higher level to the lower level? What is that force? That is force, driving force क्या है? Difference in the level. So same is the here, potential difference. That is from higher potential to lower potential. Current always moves like this. मतलब अगर डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे. और वो पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है? जो हम बैटरी या जो सेल हम उस सर्किट के अंदर लगाते हैं. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यू कैन से इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a charge from point A to point B.
So it is just a work done. Potential difference का फॉर्मूला है, it is the work done, मतलब आपने कितना काम किया, मतलब बैटरी ने कितना काम किया, upon the quantity of charge moved, means कितना चार्ज मूव करवाया गया. मूव करवाया गया means what? क्या प्रोड्यूस हुई उससे? इलेक्ट्रिसिटी. So V, it is the symbol of potential difference is V, and the symbol of work done is W, and the symbol of quantity of charge moved is Q. So here we have the first formula, which is very important from the numericals point of view, is V is equals to W upon Q. और units क्या है इसके? Volt. So this was all about electric potential and potential difference. These are the two forces, or you can say this is the main force. Difference होना चाहिए potential का between 2 points A and B. Only then the electrons, or you can say the charges, will move from one point to another point. Without this, the electricity will not be conducted, or you can say the electrons will not be moved. So I hope I'm clear with that. This formula is very important. And what are the units of potential difference? It is volt. Thank you. So we were doing the topic electric potential, which is very important in any circuit for the conduction of electricity. So next, let us revise this. The V, that is volt, potential difference, it is equals to what? W upon Q, that is the amount of work done upon quantity of charge moved. Units we have already done, it is volt. This definition is very important from volt's point of view. पक्का question आ जाता है, define 1 volt. I have seen so many times, so you should know this definition and mark this very important. What is 1 volt? So the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt when सबको 1 substitute कर दो. 1 volt means when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. Means कितना काम हम कर रहे हैं, क्या करने में? Means 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge को हम move करवा रहे हैं from one point to another point. So this is what? 1 volt. So 1 volt, it is equals to 1 joule upon 1 coulomb. So 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. This is very important. This is the definition of 1 volt. Now the instrument voltmeter connect किया जाता है circuit में to see the potential, or you can say to measure the potential difference between the 2 points. So students, our topic for today will be electric current. As we have already discussed, what is current? What is electricity? It is the flow of charge. So what is electric current? It is the rate of flow of charge. Means जो charge flow हो रहा है, or you can say the electrons which are flowing, the rate, मतलब वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. So whenever we talk about rate means what? We will divide that quantity by time taken. So I, that is current, is equals to the charge which is passing through a circuit upon time taken. That would be what? That would be electric current. Units of electric current, they are ampere, and the symbol is A. This is very important topic. Now again the question, define 1 ampere. So what will be 1 ampere? It is the current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge will be passed through any circuit in 1 second. So substitute Q also 1 and T also 1. So you will get what? You will get 1 ampere of current. Current is measured by an instrument which is called
ammeter. So what is the instrument through which you can measure the current? It is ammeter, and the symbol of ammeter is A, like this. This is the instrument which is fitted inside the circuit, which gives you what? Which gives you the reading of current flowing through any circuit. Is it clear? So this was all about electric current.